ମାନର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ନର୍ମାଲ ଆଉ ଜିମାନ ଇଫେକ୍ଟ, ନର୍ମାଲ ଆଉ ଏନୋମାଲସ୍ ଜିମାନ ଇଫେକ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ କହ। ଲେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଥାଅ, ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଏନୋମାଲସ୍ ଜିମେନ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ। Difference between normal and anomalous Zeeman effect. ए डिफरेंस काली लेखिक आसो परदिन तुम निश्चित भाव में तुम हम कौन जहाँ भी हो दीटा क्लास अधा अधा फास्ट अधा सीरियली वाइज पड़े आस जी आसना आस सीरियल वाइज एबसेंट गोटे पकई भल से गोटे पाने देवी है इंटरनाल मार्क समस्त 5 मार्क काटे किए न तुमको बहुत टाइम देदेली नेक्स्ट सोमवार को टोटली छाड़ लेख एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमालस जीमेन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमालस जीमेन इफेक्ट तो विराट बोर्ड explanation of anomalous Zeeman effect. Because the spectral line which arise from transitions, the spectral line which arise from transitions, between components of multiplate multiplate labels produce a complex Zeeman spectra बा पैटर्न लिखो प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स जीमान पैटर्न PATTERN देखो द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमालस जीमेन इफेक्ट is found in the spin of the electron. The explanation of anomalous Zeeman effect is found in the spin of the electron. The spin of the in vector model of atom the orbital angular momentum the explanation of the anomalous in the vector model of the atom the orbital angular momentum L vector capital L and spin angular momentum S vector S vector are precise
precess like a PRECES are precess rapidly around +3 third कौन लिख लो around total angular momentum J vector total around momentum J vector rapidly around total angular momentum J vector তাহলে এটি তিনটা ভেক্টর আসলা কোন কোন আসলা তিনটা ভেক্টর গোটে L ভেক্টর আর গোটে S ভেক্টর আর গোটে J ভেক্টর রিলেশন কে কই পারিবো হ্যাঁ J equal to L plus A yes hello L plus S देखो when atom is placed in weak magnetic field when atom is placed in weak magnetic field B vector तो गोटे पॉइंट आसे एग्जाम रे जे एनोमालस जीमैन इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड रे रुहे को मैग्नेटिक मन रहबो शॉर्ट क्वेश्चन ओटे देइथली बोले शॉर्ट क्वेश्चन ओटे लिखा में दे नथली when atom is placed in weak magnetic field B vector directed along z axis directed along z axis the magnetic moment mu vector magnetic moment होचे mu vector associated with j vector to precess slowly precess slowly about z axis ब्रैकेट लिख दो B vector it is called Larmor precision Larmor लिखिबो LARMOR precision PRECESSION precision it is called Larmor precision it is called Larmor precision and motion is quantized that is I dot E that is projection of J vector along field direction B vector are taken discrete values that is jz equal to mj where mj equal to where mj equal to j comma j minus 1 j minus 2 up to minus j plus 1 minus that means plus 0 minus ये भी 2n plus 2 j plus 1 वैल्यू आसे एटा हम पढ़थले रूट ओवर ऑफ 2j plus 1 पढ़नथले ओटे फर्स्ट इक्वेशन माने पका 2l plus 1 root over h square हला से 2j plus 1 root over माने पड़छि h square हला
तो ये लिख सार तो ये कौन बुझल फास्ट शुण फास्ट है आम एनोमालस जीमेन इफेक्ट फास्ट कौन है यहाँ हूँ मल्टी लेवल है ये स्प्लिटिंग जो हम ये नॉर्मल जीमेन इफेक्ट कौन होता है सिंगलटा ट्रिपल होता नॉर्मल ये कौन हम केतेटा हुए किए कह कौन थी D1 D2 थिला ना D1 D2 रा कौन कहलु जा पचे तू कह एनोमालस रो गोटे D1 D2 पढ़ाइथिला मने अछि काई मने नहीं आइदर क्लास रे अटेंटिव नो रूम रे पाठ पढो D1 D2 कौन थिला हमरा ता पाठ को D1 D2 कौन थिला हां कहार D1 D2 कहार थिला कौन एलिमेंट कौन थिला सोडियम लाइट थिला मने अछि सोडियम लाइट एग्जांपल देना थिले D1 D2 D1 में केतेटा स्प्लिट हुए D1 लाइट केतेटा स्प्लिट हुए टू ग गुण D2 टा बस D1 टा 4टा लाइन स्प्लिट हुए D2 टा 6टा लाइन स्प्लिट हुए मन रहला सोडियम लाइट थिला सोडियम लैंप लाइट थिला नै कि तो एडी से कहूची सुना एनोमालस रो से कहूची जेटा वीक मैग्नेटिक फील्ड रहबो आ एटी स्पिन टा ही हमर कोन करबो प्रिसिसेस करबो लार्मर प्रिसिजन में नॉर्मल ले पढ़थिले मने पक्का जो क्वांटम रे पढ़नथले लार्मर प्रिसिजन माने होचे जे स्पिन टा बोथ जे आउ एल आउ जे कोन एल आउ जे कोन के कहबो एल वेक्टर और जे वेक्टर जो लिखि से कोन थिला एंगुलर कोन जेटा होचे टूटा एम कौन जे कौन एल कौन एवं तो मन रखिबो देखो एटी पर एबे लिखिक आसले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टा होची एल वेक्टर आउ जे वेक्टर टा होची पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम होची एस वेक्टर हैला तो एटी टोटल जो अछि जे एंगुलर मोमेंटम टा टोटल एंगुलर मोमेंटम कोन अछि जे अछि से कोन करछि ना से बोथ एल और एस को नै कि चलछि so एल और एस का प्रिसिसेस हबो प्रिसिसेस मींस जो डायग्राम करथि सेतना मने पड़छ जो हमर इलेक्ट्रॉन डायग्राम रे कोन नथिले क्वांटम रे देखो मने पकाओ जेंति कहली नॉट टू वेज करे नॉट टू इले देखो डोट लाठी कांडले पुरियो से कोन दे बिकॉज़ से एमिटी मतलब केवल मथड़े ही उठे को एटा को प्रिसिशन को फिक्स क्यों से जो पॉइंट से फिक्स थिबो केवल मथाटा पाटा एमिटी आइदर से एमिटी फील्ड हे पड़तो नले एमिटी फील्ड देखिते सेटा ଗୋଟେ ପ୍ରିସିସନ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ है तो सेटा इलेक्ट्रॉन टा कोन होछ सेटी ना एटी इलेक्ट्रॉन टा बहुत एल आ एस को नै कि प्रिसिसन करछ एक्सिस टा गोटे टोटल एक्सिस टा होछ जे एल आ एस टा से नै कि रोटेट सही पाए एटी स्प्लिट टा बेसी होछ और स्प्लिट रो वैल्यू केता छ 12+1 सेटी 12+1 थिला एटी 2j+1 वैल्यू जस केना जे का रेस है सेटी देखो हमरो नॉर्मल ले देखो एम एल वैल्यू लिखथिले एटी एम जे वैल्यू बाहर कर बुझलो कि नॉर्मल ले देखो एम एल थिला एटी एम that is lekho that is I dot e I that is mj has total mj टा सबस्क्रिप्ट लिखियो mj has total 2j+1 values 2j+1 सेटा ब्रैकेट रे रखियो 2j+1 values फुल स्टॉप so precision of j vector so precision of j vector around b vector break break each
J level into 2J plus 1 Zeeman levels into 2J plus 1 Zeeman levels. Hello? The separation between the Zeeman levels. The separation between the Zeeman levels is determined by the strength. The separation between the Zeeman levels is determined by the strength of magnetic field, and total magnetic moment of the atom, which is calculated below. As the ratio of orbital magnetic moment of orbital angular is कौन किए कहबो रेशियो कौन थिला को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल जतरे यूज होती मन रखो सेटा होती n वेक्टर सेटा होती n वेक्टर स्पीड जो यूज होती सेटा होती s वेक्टर मैग्नेटिक जो यूज होती m वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंट जो होती j वेक्टर कारण से होती एडी कोन मानला सेंटेंस का होती खाता रे मान ले किछि रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट माने सच n तेरा जो l ऑर्बिटल में मैग्नेटिक mn टोटल को सबमिट करा आउट दीजिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट सदा l वेक्टर ये तो मैग्नेटिक यूज है ताले से केवल ऑर्बिटल का लिखो l वेक्टर लिखो ताले रेशियो का क्या लिखो ना mu l लिखो mu l लिखो बा m l लिखो l वेक्टर इधर वैल्यू कितने है लिखो तो यार वैल्यू कितने प्रॉब्लम है मु तुमको प्रीवियस क्लास रे कहली जोटा पढ़ा जब ताको एटलीस्ट लुक आउट करके आस सेटा तो करू ना और जेटा पढ़ा हेई भी ताको भी तुम पढ़ो किंबा मन रखा पे टोटली चेष्टा ही नहीं सिंपल यार होची e/2 बस बड़ा बड़ा लिखी से बड़ा लिखने का जो माइंड रे बसे आड़ी बड़ा लिखे हां लिखबी जेतला कहबो बड़ा लिखले मन रहबो त लिख दे किछ असुविधा नहीं कांथर लिख देखि कहबो सेटा भी होबनी देखो गोटे एक्सपेरिमेंट करियो देखो ए कांथर 10 टा फॉर्मूला लिखि जिबे हला प्रीवियस क्लास नेक्स्ट क्लास में पचारिबे कथा पिला कहि परिबो मैंने जानी भी को कांथरे कौन लगे यदि ऑनलाइन जैसे कॉपी पेस्ट मास्टर थी तो तरीका देखो the ratio of spin magnetic moment the ratio of
spin magnetic moment, the ratio of spin magnetic moment to spin angular momentum देखो टॉर्क गुला तुम बुझ परियो देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम दउछ तले एटा एस वेक्टर आरटारे देखो लास्ट थिला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखछि माने एल वेक्टर एस वेक्टर किंतु मैग्नेटिक लिखला को ये म्यू लिखछि म्यू एल म्यू एस म्यू जे कुछ बोलो तेणु एटा देखो द रेशियो ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखो टू लिख दो तो एटा कोन हो म्यू एस वेक्टर बाय एस वेक्टर मैग्नीट्यूड केते आसो के कोन हो देखो एल ई बाय 2 एटा दिला एठी खाली गोटे चेंज है सेटा तले ई बाय एम कोन हो ई बाय एम सर एटा तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला चले सर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हां मैग्नेटिक फील्ड हां मैग्नेटिक फील्ड बहुत एक सर कोई मैग्नेटिक है तो ये बी को सेटा ईबी बाय टूटा होगा ना जो लागू प्रेसिशन में ना এই ইবি বাই এটা ইবি লাগু প্রেসিশন ইবি ভেলোসিটি এই ইবি বাই টর্কটা আসিব এটা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ই বাই 2 এর মধ্যে যেটা রহিলা এটা স্পিড পাই হচ্ছে ইলেকট্রন স্পিড পাই ইলেকট্রন স্পিড হলে এটা মাস আর ইলেকট্রন উপরে ঠিক আছে এটা ম্যাগনেটিক ভেলোসিটি ইয়া পরে যা ডেরিভেশন আসিব এটা বি আসিব ইনস্টেড অফ বি আসিব due to inequality total magnetic moment mu equal to total magnetic moment inequality total magnetic moment mu equal to mu l vector plus mu s vector is not exactly antiparallel to j vector full stop since j vector is invariant j vector is invariant full stop so l vector comma s vector comma mu l vector comma mu s vector precesses around j vector precesses around j vector यार लेंथी डेरिवेशन में एक शॉर्ट कर दूँ लॉरेंज यूनिट मने अछि पढ़ाई थिला लॉरेंज यूनिट आरटारे पढ़ाई थिला देखो वैल्यू केते को ईबी बाय 4 पाई एमसी ए हॉस्टल ले पानी आगे बोलिबो सर
ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇ ଲେଖ ଲେଖ ଲେଟ୍ theta is the angle between ଲେଟ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ସାରିବି ଲେଟ୍ theta is angle between j vector and l vector and alpha is angle between alpha is angle between j vector and s vector এই তো ডায়াগ্রামটা আমি গেট দেখো এই ডায়াগ্রাম রো কেবল j l s এই ডায়াগ্রামটা আমি মনে করছি এটা শোনো তোমার এটা j ভেক্টর ইকুয়াল টু l s j ভেক্টর ইকুয়াল টু l ভেক্টর প্লাস s ভেক্টর তুমি রেক্টাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট করছিলা রেক্টাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট মনে করছো আমরা ডায়াগ্রাম শিখাইছি যদি এটা একটা ভেক্টর যদি এটা একটা ভেক্টর এটা সেম ডিরেকশনে দিবে the component of mu vector mu vector perpendicular to j vector mu vector perpendicular to j vector is continue its direction is continue its direction whose average is 0 whose average is 0 full stop only component of mu vector parallel to j vector only component of mu vector parallel to j vector is conserved in magnitude which contribute to magnetic moment of atom magnetic moment of atom mu j mu j equal to component of mu l mu j equal to component of mu l vector along
कंपोनेंट माने तार એટલે કે कंपोनेंट ऑफ म्यू एल along j कंपोनेंट आले जो हमें से जो डायग्राम में पढ़ते तार किंतु एल टा जे जो डायरेक्शन को सेटा cos थीटा माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहले प्राइम ता कोन है cos थीटा राइट cos थीटा so এটা mu l लिखवा e by 2 m l cos theta plus 2 e by 2 m s cos alpha for l वाले कितने दाम है it has got e s cos by 2m l को मिलता है root over of l into l plus 1 राजा that's right तो होगा yes इधर फॉर्मूला रखा है कोई कोई e by ତୁମେ ଏତ ତ ବସିକି ଲେଖୁଛ तुझा क्या रही डायबिटीज मेलिपेटस हाँ पर तते तो सब जना
वेक्टर 0 आज वेक्टर एडिशन पढ़ा बोला ऊपर फर्स्ट सेम का कहले पचारे एस वेक्टर ना s स्क्वायर केमिति है अरे देखो x वेक्टर इनटू s वेक्टर डॉट s वेक्टर देखो वेक्टर में एति जगह तने इनटू कोइ परिबनी क्रॉस कोइ परिबनी डॉट कोइ परिबनी जोड़ा बाय जोड़ा अछि सेटा कहबो आइदर को s डॉट को डॉट देखो s डॉट है ना तो सेमिति ए साइड को नहीं जो j माइनस l वेक्टर डॉट j वेक्टर माइनस l को मल्टीप्लाई करके बुझिपाला प्रोफेसर भलो भलो कथा बोलता पचारि एटा देखबे एटा एटा s वेक्टर को इन वेक्टर एडिशन s वेक्टर इक्वल टू ठीक देन s स्क्वायर इक्वल टू j स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2jl cos थीटा केमिति हैगा ऊपर एटा बुझाई एटा से बुझिबाला कि नहीं के बुझिबाला एटा s डॉट s इज मतलब जे एटा कोन करी उठले ये दरकार है एटा को जो फैक्टर एडिशन जान तो डायरेक्ट कर तो कह के मु जाने नहीं रखे मु लिख देरी से एटा बुझाला हला एटा केमिति